हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए एनिमल्स इन प्रिजन जो चैप्टर है क्लास 11th में बिहार बोर्ड में, उसके मैं आंसर्स लेकर इस वीडियो में आया हूँ। और मैंने जो आंसर्स तैयार किया है वह मैं लेकर आया हूँ और क्वेश्चंस के साथ मैं आपको आंसर्स बताता चलूँगा। क्वेश्चंस की हिंदी मैं आपको बता दूँगा, लेकिन आंसर्स जो हैं वो मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा। तो एनिमल्स इन प्रिजन, तो इसके राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं लॉन्ग आंसर्स लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि जब आप B1 और B2 सेक्शन करते हैं तो लॉन्ग आंसर्स आपको अपने आप समझ में आ जाता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको लंबे आंसर्स नहीं लिखने होते हैं, आपको बहुत ही शॉर्ट में आपको आंसर देना होता है। इसलिए वो बराबर कहते हैं कि राइट द आंसर्स ब्रीफली, मतलब शॉर्ट में आपको लिखना है। तो एनिमल्स इन प्रिजन का मैं क्वेश्चन आंसर्स B1 और B2 लेकर मैं चलता हूँ। तो B1 का 1 है, सेक्शन 1 B1 का, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका पहला है नेहरू डिसलाइक्ड हिज लिटिल सेल, मतलब नेहरू अपनी छोटी कोठरी जो जेल की थी उसको पसंद नहीं करते थे, तो ये फॉल्स है, ये गलत है। नेक्स्ट इज नेहरू लिव्ड विथ अदर प्रिजनर्स इन हिज सेल, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज नेहरू वॉज अलाउड टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट, so this is true. Next is Nehru was imprisoned in the European lockup. This is false. Next is Nehru loved the sight of the Himalayas. This is true. Next is spring in Dehradun is longer than that in the plains. This is true. And the last one, number 7, is the change from bud to leaf is sudden. This is true. So B1 section 1 is over. Now we move on to B1 section 2. तो इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। मैंने पहले भी कहा था कि आपको आंसर्स जो होता है एग्जामिनेशन में आपको ब्रीफली लिखना पड़ता है। तो B1 का सेक्शन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो the first question is, how long did Nehru live in his little cell in Dehradun jail? तो देहरादून की छोटी सी जेल की कोठरी में नेहरू कितने दिन तक रहे? And the answer is Nehru lived in his little cell in Dehradun jail for 14.5 months. Next question is, whom did Nehru treat as his old friends? Can you make friends with them? The answer is Nehru treated little tufts of grass and bits of stone as his old friends. दूसरा सेक्शन है कैन यू मेक फ्रेंड्स विद देम। तो मैंने जो जवाब लिखा है वह ये है, यस आई कैन मेक फ्रेंड्स विद देम बाय प्लेइंग अराउंड देम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज हु वर द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल? डिड नेहरू लाइक देम? इसका मतलब है कि छोटी सी जेल की जो कोठरी है उसमें और कौन रहते थे और क्या नेहरू उन्हें पसंद करते थे? तो आंसर है द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल वर वॉस्प्स, हॉर्नेट्स एंड लिजर्ड्स। और दूसरा सेक्शन है डिड नेहरू लाइक देम? तो आंसर है नो, नेहरू डिड नॉट लाइक देम, but he had to be with them inside the cell. Now the next question is, but in Dehradun I had one privilege. What is the privilege Nehru is referring to? Was it Nehru's special privilege? मतलब कि लेकिन देहरादून में मुझे एक सुविधा थी,
What is the privilege Nehru is referring to? मतलब नेहरू किस सुविधा के बारे में बात कर रहे हैं? Was it Nehru's special privilege? मतलब क्या वह नेहरू की विशेष सुविधा थी? तो the answer is the privilege Nehru is referring to is that he was kept in an old lockup outside the jail walls, but within the jail compound. As the lockup was small, he, along with other prisoners, were allowed to go out in the morning and evening and walk up and down in front of the gate. That was a distance of about 100 yards. Now, the next question is, what was European lockup meant for? How was it different from the other jail? मतलब यूरोपियन जो कोठरी थी, जो जेल थी, वह किसके लिए थी, क्या चीज़ के लिए थी? एंड हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेल, मतलब दूसरे जेलों से यह अलग कैसे थी? तो उसका आंसर है द यूरोपियन लॉकअप वॉज मेंट फॉर यूरोपियन कन्विक्ट्स एंड अदर्स. इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेल as it had no enclosing wall and a prisoner inside the cell could have a fine view of the mountains and the life outside. Now the sixth question is, only a prisoner who has been confined for long behind high walls can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walk and open views. What does Nehru mean by this? Explain. Now that इसका मीनिंग है जो कैदी, only a prisoner who has been confined for long, मतलब जिस कैदी को लंबे समय की सज़ा होती थी, behind high walls, can appreciate the extraordinary psychological value of this outside walk. मतलब वही इसका ये मनोवैज्ञानिक इसका कारण था कि वही केवल जो लंबे समय के लिए कैदी थे वही बाहर देख सकते थे और खुला नज़ारा का आनंद ले सकते थे. What does Nehru mean by this? मतलब नेहरू क्या कहना चाहते हैं, उनके कहने का अर्थ क्या है? Explain मतलब वर्णन कीजिए. तो answer is, by this Nehru means the freshness that one got when coming out of the high wall prison. One could see the big and beautiful mountain range of the Himalayas and feel very happy. While walking outside and looking at the mountains, one felt very fresh. So, question number 6 हो गया. Now, number 7. How did the sight of the towering Himalayas move his heart? मतलब इतना बड़ा जो हिमालय पहाड़ था, टावरिंग हिमालयस मतलब बहुत ऊंचा बड़ा पहाड़, तो इस पहाड़ को देखकर उन्हें क्या महसूस होता था, उनके दिल को क्या महसूस होता था? What lesson did he derive from the mountains? मतलब पहाड़ों से उन्होंने क्या सीखा? तो इसका आंसर है The sight of the towering Himalayas moved his heart. He used to become so happy that he would forget all his tiredness of being in jail. He loved to see the mountains and grew so intimate with them that he carried his refreshing experience even inside the jail. तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और ये है Which sight does Nehru call gay and cheering? मतलब नेहरू क्या देखते थे जिसको वे गे और चीयरिंग कहते हैं? गे मतलब खुश होना को कहते हैं, और चीयरिंग उल्लास बढ़ाने वाला. हाउ डज ही डिस्क्राइब इट? वह कैसे इसका वर्णन करते हैं? तो आंसर इज नेहरू कॉल्स द अपीयरिंग ऑफ द लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन ऑल ओवर द पीपल्स एंड अदर ट्रीज गे एंड चीयरिंग as they looked fresh and cheerful. He feels very happy to see life coming all over them. He feels glad to see the leaves coming out very quickly in millions and shining in the sun and playing about in the breeze.
अब हम B2 का सेक्शन 1 पे आते हैं फ्रेंड्स। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। तो आपको इस में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, क्योंकि सेंटेंस का कुछ पार्ट दिया हुआ है, बाकी आपको भरना है। तो उसी की बात यहाँ कही गई है। तो द फर्स्ट इज द मानसून रेन्स वर ऑलवेज वेलकम बिकॉज, अब यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो ये कंप्लीट सेंटेंस होगा, द मानसून रेन्स वर ऑलवेज वेलकम बिकॉज दे एंडेड द समर हीट। Now the next one is one longed for decent habitation because of, अब आगे भरना है। तो one longed for decent habitation because of thunder and rain and piercing cold winds. Now number 3, the prisoners became more observant of nature's ways because, अब आगे भरना है। तो the prisoners became more observant of nature's ways because they were prevented from indulging in normal activities. और लास्ट है इसका फ्रेंड्स, नेहरू wanted to exterminate wasps because, अब आगे भरना है। तो नेहरू wanted to exterminate wasps because a wasp had stung him. तो यहाँ ये कंप्लीट होता है। और B2 के सेक्शन 2 में हम अब चलते हैं। तो इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्रेश मैंगो लीव्स, व्हेन डू दे बिकम ग्रीन। तो ताज़े जो आम के पत्ते होते हैं उनका रंग क्या होता है, एंड व्हेन डू दे बिकम ग्रीन, वे हरे कब हो जाते हैं। तो इसका आंसर है, the color of the fresh mango leaves is reddish brown and russet colored. They become green during spring. Now the next question is, what made Nehru cooped up? Cooped up कहते हैं कहीं पर बंद जगह पे बंध जाना। तो what made Nehru cooped up, मतलब किस चीज़ ने नेहरू को बिल्कुल एक छोटी सी जगह पे रख दिया। तो the answer is the water dripping from the ceiling or rushing in from the windows made Nehru cooped up. So this is the answer. Now the next question is, what made noise like an artillery bombardment? मतलब जैसे बमबारी होती है उस तरह की आवाज़, मतलब क्या चीज़ थी जो ऐसी आवाज़ आती थी, लगता था धूम धड़ाका हो रहा हो, बमबारी हो रही हो। तो किस चीज़ से ऐसी आवाज़ आती थी। द आंसर इज द बिगर hailstones coming down on the corrugated iron roofs made a noise like an artillery bombardment. Now the next question is, why does Nehru remember 24th of December 1932? How does it throw light on Nehru's love for nature? तो इसका आंसर है, Nehru remembers 24th of December 1932 because on that day there was a thunderstorm and rain all day, and it was bitterly cold. In the evening the weather cleared up suddenly and there was a thick cover of snow on the mountains and hills. Nehru liked the beautiful view of snow-covered mountains. This throws light on Nehru's love for nature. Now, question number 5. I realized that while I complained of loneliness, that yard, which seemed empty and deserted, was teeming with life. Which life is being referred to here? तो इसका मतलब है, I realized मतलब मैंने महसूस किया कि जब मैं अकेलेपन की शिकायत कर रहा था, तो that yard which seemed empty and deserted, यार्ड मतलब बगीचे जैसी जगह को कहते हैं जो लगता था कि ये खाली है और वहाँ कोई नहीं है, was steaming with life, और लगता था कि वहाँ जान आ गई हो। Which life is being referred to here? तो किस तरह की जान के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो इसका आंसर है, the life being referred to here is the life of creeping or crawling or flying insects in the yard.
Now, question number 6. How was the problem of feeding the lost baby squirrels solved? What was ingenious? Ingenious मतलब कुछ नया. तो what was ingenious about it? मतलब how was the problem of feeding the lost baby squirrels solved? मतलब जो छोटी गिलहरी थी, बच्ची गिलहरी थी, उसको खिलाने की समस्या कैसे हल की गई? एंड व्हाट वाज इंजीनियस अबाउट इट? उसके बारे में क्या नई बात थी? तो इसका आंसर है द प्रॉब्लम ऑफ फीडिंग द लॉस्ट बेबी स्क्विरल्स was solved by attaching a little cotton wool to a fountain pen filler. Using it as a feeding bottle was something ingenious about it. Now, the 7th question is, what behavior of the parrots does Nehru describe here? मतलब तोतों के किस व्यवहार के बारे में नेहरू यहाँ वर्णन करते हैं? Does it have any resemblance to human behavior? क्या मानव के व्यवहार के जैसी कोई समानता यहाँ है? तो इसका आंसर है नेहरू डिस्क्राइब्स हियर द कोर्टशिप एंड लव मेकिंग ऑफ मेल एंड फीमेल पैरट्स एंड द फियर्स क्वारल्स बिटवीन टू मेल पैरट्स ओवर अ लेडी पैरट. और दूसरा सेक्शन है डज इट हैव एनी रिजेम्बलेंस टू ह्यूमन बिहेवियर? तो इसका जवाब है यस, इट लुक्स लाइक ह्यूमन बिहेवियर एज मेन एंड वुमेन also behave like this. Often there are examples of two men seen in love with the same woman. तो अब B3 का 1. तो इसमें हम देखते हैं complete the following sentences on the basis of the lesson. तो आपको complete करना है और इसमें है नंबर 1. मैं पूरा सेंटेंस पढ़ देता हूँ, आप समझ जाएंगे. Nehru could not see most of the birds. He could only hear them because there were no trees in the little yard. Number 2. In Alipur jail, Nehru woke in the middle of the night because he often felt an insect called centipede crawling over his foot. Number 3. Long-term convicts often keep animal pets because they suffer most from emotional starvation. Now, number 4. The bitch used to come to Nehru for food because she was usually starving. Now, number 5. The puppy survived because Nehru nursed her with care. Or number 6 है Nehru could not look after his pet dogs properly because other matters claimed his attention. तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं B3 का सेक्शन 1 और B3 का सेक्शन 2 और इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. तो मैं इसमें आता हूँ. नंबर 1. देहरादून हैड अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स. मेक अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स दैट मेक दिस वेराइटी. तो इसका आंसर है द लिस्ट ऑफ अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स इंक्लूड्स कोयल, ब्रेन फीवर बर्ड, ईगल्स, काइट्स एंड वाइल्ड डक्स. नेक्स्ट वी हैव व्हाई वाज ब्रेन फीवर नेम्ड सो. मतलब ब्रेन फीवर बर्ड जो है उसका नाम ऐसे क्यों पड़ा? नाउ ये कक्कू जो बर्ड होती है कोयल की तरह, तो इसी में एक वैरायटी होती है जिसको ब्रेन फीवर बर्ड कहते हैं. सो द आंसर इज द कक्कू also known as brain fever bird was named so because with amazing persistence it went on repeating the same notes day and night in sunshine and in pouring rain. Now the next is, how was the little monkey rescued? The answer is, when the little monkey came down. मैं क्वेश्चन की हिंदी बता देता हूँ. छोटा जो बंदर था उसको कैसे बचा लिया गया. खैर आप समझ रहे होंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ. When the little monkey came down into the barrack enclosure and could not mount up the wall again, the warder and some prisoners caught him and tied a string around his neck.
When the parents of the little one saw this from the top of the high wall, they became angry. Suddenly, one of them jumped down right into the crowd, which surrounded the baby. The crowd fled terrified, and the little monkey was rescued. Now, the next question is, we often had animal visitors that were not welcome. Name the animals Nehru is referring to. Or the answer is the animal visitors Nehru is referring to are scorpions, snakes and centipedes. Now the fifth question. As a matter of fact, I welcome the diversion. Which diversion is Nehru talking about? तो मतलब वास्तव में मुझे कुछ अलग होना अच्छा लगता था, कुछ नई बात होती थी तो मुझे अच्छा लगता था। डाइवर्शन का ये मतलब है। विच डाइवर्शन इज नेहरू टॉकिंग अबाउट, मतलब किस अलग बात के बारे में नेहरू कह रहे हैं। द आंसर इज द डाइवर्शन नेहरू इज टॉकिंग अबाउट is the news of the snakes found inside the jail that made headlines in the press. Now the next question is, what made Nehru vault clear out of the bed? Vault clear मतलब उछल कर बेड से हट जाना, कूद जाना। तो what made Nehru vault clear out of the bed? किस चीज़ के कारण नेहरू अपने बिस्तर से उछल कर बाहर आ गए? So the answer is the movement of a centipede over his foot made Nehru vault clear out of the bed. Now the seventh question is, how did Nehru get tied to some dogs? मतलब इसका अर्थ है कि नेहरू का रिश्ता कुछ कुत्तों से कैसे बन गया, कैसे वो कुछ कुत्तों से जुड़ गए। तो इसका आंसर है, when a jail official brought a bitch in the Dehradun jail and left it there when he was transferred, the dog became a homeless wanderer living near drains and often going without food. She often used to come to Nehru for food. When Nehru began to feed her regularly, the dog got tied to her. मतलब उस कुत्ती से उनका संबंध एक बन गया। He even took care of her puppies. As he had always been fond of dogs, he loved their company and had even kept some. मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इसको। When a jail official brought a bitch in Dehradun jail and left it there when he was transferred, the dog became a homeless wanderer living near drains and often going without food. She often used to come to Nehru for food. When Nehru began to feed her regularly, he got tied to her. He even took care of her puppies. As he had always been fond of dogs, he loved their company and had even kept some. Now, the last question in this section is question number 8. Now, this is, what did Nehru do when the puppy fell ill? मतलब जो कुत्ते का बच्चा जब बीमार पड़ गया तो नेहरू ने क्या किया? डू यू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन? क्या आपका भी इस तरह का कोई अनुभव है? तो अब इसका आंसर है, when the puppy fell ill, he nursed her with care and even would get up in the night many times to look after her. Yes, अब दूसरा सेक्शन का जवाब है, डू यू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन? क्या आपका भी कुछ ऐसा अनुभव है? तो मैंने आंसर लिखा है, यस, आई ऑल्सो हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस. अ स्ट्रीट डॉग वुड ऑफन कम टू मी फॉर फूड एंड आई ऑलवेज फेड हिम. He would often lick my feet and sit for hours close to the gate of my house. तो यहाँ पे सेक्शन बी समाप्त होता है. नाउ तो इस तरह ये सारा क्वेश्चन और आंसर्स मैंने आपको बताया है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया है क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जाएंगे. दूसरी बात कि जब आप ये दोनों सेक्शन के जवाब जान जाएंगे तो आपको यह टेक्स्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको
मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल because I'll be coming to you with more and more in future, and that's my promise. Thank you.